Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about the earthquake that happened today in the morning in Delhi. And we will discuss about it. In fact, in one place in Bihar also, we had seen earthquake in the morning today. So we will discuss the reason why we have so many earthquakes in Delhi region. I'm sure if you are living in Delhi NCR or North India region, you must have seen in the last 5, 6, 7 years, we have seen the rise of earthquakes in these regions quite a few times. You will find even if it's a mild tremor, but it too comes. So we will be discussing in today's class about the reasons, the geographical reasons, and the questions that can be asked related with that. Because of course, if things are in the news, there is high chance that the question maker can give question related to the topic. है ना? तो कोई चीज न्यूज में होती है तो क्वेश्चन मेकर जो है वो उसको ज्यादा ध्यान देते हैं क्वेश्चन बनाते वक्त. Yes. So am I audible, visible? Everything is fine? Yes, good evening, Pranshi Gobil. Good evening, everyone. So is everything fine? Is my okay? So let us begin with. So this was actually in the morning. This news. So you can see this is Delhi, and in the epicenter was actually in Delhi, because earlier we had seen previous earthquakes which had impact in the Delhi, and but the epicenter was not in Delhi. But this time we have seen actually inside the Delhi Dhola region. So Dhola Kuan is a part of Delhi. Okay, of course. So those who live in Delhi, they know where is Dhola Kuan. If you do not understand, so I will give you a nearest landmark. It is somewhere near to IIT Delhi, you can say. Not exactly, but very near to that. So just to understand it, to have a rough idea. Okay. So magnitude was somewhere around 4 or 4.2 Richter scale, and it was so that is what you should be knowing about it. Now, this is a very famous previous year question of an exam, and I hope you all should be answering it. Which of the following is used to measure earthquakes? Anemometer, seismograph, Saffir-Simpson scale, thermocouples. What is the right answer to this question? Yes, and I think it's very easy. जहां पर भी आप ये word देखोगे, seismicity, ये term देखोगे. So you should think that this is talking about earthquake. So B is the right answer. Yes, very good. Many people have answered, right? Can anyone tell me what is option C? This was asked in some exam. If I'm not wrong, Jamia या MHCT में पूछा था. This one, Saffir-Simpson scale. कोई बता सकता है option? What is option C? Yes, इसका आंसर B है. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. Lot of people answered. Natasha, Priyanshi, Tejasvi, Safi, you all were right. But can you please tell me what is Saffir-Simpson scale used for? To measure what? This was asked in some previous year question. Like I think if in Jamia or MHCT they had asked. So it is about measuring the speed of hurricane or wind speed वगैरह के लिए. Not for bureaucracy. No. Okay. So seismographs are instruments used to record the motion of the ground during an earthquake. है ना? Hurricane damage. Yes, Natasha, you are right. Option C का आपने सही जवाब दिया. That classifies hurricane speed by wind speed and all. ठीक है. और लास्ट वाला क्या होगा? थर्मोकपल्स. ये क्या चीज के लिए यूज होता होगा? देखो, always understand whenever things are in the news, whenever any question is asked, try to break the words and you will get to know. अगर आपको ये भी पता होगा थर्मो का मतलब क्या होता है, तो you can answer something related with heat, temperature, ऐसा कुछ होगा ना, temperature, heat. So if this type of question comes, you should try to break the term and try to reach to the answer. Okay, so that is how you should be knowing. Yes, temperature, heat से related. Very good, good, very good. Now, so we have talked about a 4. कहीं पे 4 लिखा है. At some places they are writing 4.2. At some places they are writing 4.0. Earthquake hits actually. So exactly it is near Durga Bai Deshmukh College of Special Education in Dhola Kuan. So this is the place where we had seen actually the epicenter of earthquake. Thermocouple is for measurement of temperature. Yes, Pranshi Govind, you were right. Safi Nomani, Natasha, you are right. Okay. So that is what so people have said that we have seen tremors and all. Okay, so even people of Noida has also talked about it, that entire building was shaking, and we have seen videos also. I'm sure you must have seen on social media the videos where actually it is very clearly evident that earthquake is coming and all. Similarly, later on, somewhere around at ये आया था morning में 5:36 AM में, है ना, in Delhi. Okay, somewhere around 8 PM के आसपास, 8 AM something. We had seen earthquake after almost 1.5 hours. We have seen earthquake in Siwan in Bihar also. Okay,
and that too also lies in the same zone. So we will discuss about the different zones. अच्छा कोई बता सकता है कि दिल्ली lies in which zone? Zone 1, 2, 3, 4 कौन सा वाले में? 2, 3 और 4 कौन सा zone में आता है when it comes to earthquake? Because if you have read the newspaper, this was in the news. Which zone? I mean, under which zone Delhi comes as far as earthquake zonation is concerned? Because India has been zoned, like different zones have been made that this is highly prone to earthquake, less prone to earthquake, like that. 1, 2, 3, 4. So in which category Delhi comes? Yes, Natasha, you're right. Fourth zone में आता है actually. And if you have read newspaper, it had talked about it. ठीक है, ये सब बात हुई थी न्यूज़पेपर में. So earthquake of magnitude 4.0. देखो, they are writing National Center for Seismology. है ना, 17th February 5:36 a.m. 55 second Indian Standard Time. Okay, latitude लिख रहे हैं 28.59 north and 77.16 east, which is actually equivalent to, अगर आप देखोगे यही जो है दिल्ली का कोऑर्डिनेट है. This is the coordinate of Delhi and a 28.7 degree north latitude and 77.1 degree east. ठीक है, so एक तो हो गया बात ये. Now this is important. Depth was 5 kilometers, and people are saying that this is a shallow earthquake, and that is why many people, whatever I could read from different sources, many people witness the sound also. So the reason is it is a shallow earthquake. मतलब बहुत depth में इसका epicenter नहीं था. So the depth was not very high. 5 kilometers is very less, and that is why people had witnessed sounds also. So shallow earthquake of magnitude 4 shakes Delhi, and shallow लिखा ना. PM Modi urges people to stay alert for possible aftershocks. Means कई बार क्या होता है, एक के बाद दूसरा तीसरा भी आता है ना, हल्का हल्का. So it can happen that it can have another waves and all. But I think after that we have not seen till now. So why did residents hear a loud sound during the earthquake in Delhi? And the reason is because it is a shallow earthquake. Okay, that is what you should know. So Delhi, so depth is 5 kilometers and magnitude is 4 Richter scale. Okay, let's move on further. हाँ, तो हमने आपको कई बार बताया कि जो ये वाला रफ रीजन है ना, जहाँ पे हिमालयाज वगैरह का रीजन, स्पेशली दिस एंड दिस रीजन इज वेरी मच प्रोन टू अर्थक्वेक. ठीक है, and I'll explain why. We will discuss it. Nothing to worry. So why Delhi faces high risk of earthquake? That is what we are going to discuss in today's class. So basically, we have seen Durga Bhai Deshmukh College of Special Education in Dholakua was the epicenter and all. And from here, actually, we have seen the earthquake. Okay, yes. Now, I have one question. Since we are talking about epicenter and hypocenter, can you please tell me what is the difference between the two? And which of them is called as focus? Focus किसको कहते हैं? इसको कहते हैं या इसको कहते हैं? Because we are currently talking about a shallow earthquake, and it is linked with the understanding of this concept. Okay, what is the difference? Epicenter और hypocenter में difference क्या होता है? We had discussed in the earlier classes also. That is why I'm asking. So okay, let me tell you. So focus hypocenter को कहते हैं. ठीक है, this is a focus and this is epicenter. Okay, so I think it's easy to understand. देखो होता क्या है, जब भी earthquake आता है ना, fault में आता है. जैसे अगर आपने देखा होगा, epicenter is the point where earthquake starts. नहीं, वो hypocenter होता है. ठीक है, let me explain. Yes, Natasha, now you are right. हाँ, great. हाँ, देखो मैं बताता हूँ. देखो होता क्या है, जैसे there are many reasons for earthquake. One of them is actually fault line. जैसे अगर ये एक ब्लॉक है टेक्टोनिक प्लेट का, दूसरा ऐसे घसक गया, it goes down, for example, and it is stayed there. ये इसको कहते हैं fault, है ना? I hope you are aware. हाँ, hypocenter is the place where earthquake originates. और ये इतना, ये तो बहुत क्लियर आपको दिख रहा है सर, इतना बड़ा, लाइक दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, बट एकदम जरा सा भी होगा, स्लाइट भी होगा, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन ह्यूमंस, है ना? सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, अगर मान लो यहाँ पे फॉल्ट है
जहां पर से स्टार्ट हुआ, और उसमें जो मेन जगह है यहाँ पर है. I think this image is self-explanatory. So this is the place where hypocenter. This is the place exactly where earthquake happened. Earthquake waves started. Exact location where earthquake waves started. Okay. Now, so basically, the shortest distance to the surface is this. E wala distance hai. So this one is actually epicenter. Okay. So please be careful. Epicenter is not the place where earthquake has happened. Hypocenter is exactly the place where the earthquake waves started. Okay, but the shortest distance, I mean the shortest point on the surface with the hypocenter is actually epicenter. So सबसे ज़्यादा most likely, हालांकि 100% guarantee नहीं, but if you are standing here, you will witness the most impact in general. But there are some exceptions also because it depends upon waves nature also. ठीक है, wave के nature पे भी depend करता है. But just for understanding purpose, this is how the thing works. Now we have seen this time in Delhi a shallow earthquake. Why? Because the depth was hardly 5 kilometers. 5 किलोमीटर था ना, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, if I'm not wrong. Yes, depth was 5 kilometer. So that is why we call it as shallow earthquake. यानी जो इसका depth था वो बहुत ज्यादा नहीं था. So if there is less depth, you can understand with your own common sense that you will, if you are standing here, you will feel more impact if the distance is less, if the depth is less. ठीक है, इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि हालांकि 4 magnitude was not very high, but still we have seen a strong impact or sound also of that. ठीक है, so that is what you should be knowing. है, तो आप पढ़ सकते हो USGS की वेबसाइट पर, they have talked about it, fault और fault plane इसको कहते हैं ना. टॉप इसके ऊपर एपिसेंटर है, ये वाला हाइपोसेंटर है, you can see it here also the image. हाइपोसेंटर ही को फोकस कहते हैं, ठीक है, and this is fault plane and this is epicenter. Okay, so these are the things, the concepts you should be knowing because earthquakes has been very much in the news. So they can ask question. Even in January we had seen one earthquake in Tibet region which had impacted northern India as well. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि क्रस्ट मैंटल कोर एक्सप्लेन करें. लेट मी एक्सप्लेन, है ना. We will discuss about this to understand how actually the tectonic plates move. ठीक है, so that this we will discuss. इससे आपको समझ में आ गया कि why the plate movement happens. प्लेट क्यों मूव करता है, this I will explain in few minutes. ठीक है. So yes, that is what the Delhi police wrote. We hope you all are safe. Delhi, for many emergency, you can call on this number. If you are having any emergency, then only you can call. Okay, so that was the tweet. Now, after a few minutes, like we have seen 5:36 AM roughly, है ना, morning में we had seen the earthquake in Delhi. So later on we had seen at 8:02, देखो लिखा 8:02 morning में. So almost around 8 AM in the morning we had seen of same impact. अब देख रहे हो 4 Richter scale, but depth was high. 10 किलोमीटर का डेप्थ था. So it means कि impact would be lesser because the depth was high. तो नीचे रहेगा तो कम, जनरली कम impact होने का चांस होता है. देखो यहाँ पे पटना है, इसकी थोड़ा सा वेस्ट जाओगे, here you will find Siwan in Bihar. ठीक है, so this is the state of Bihar, and here you will find Siwan where you had seen actually this earthquake and all. Okay, or the epicenter. Now I have told you, just I will explain further also that this region, that the Himalayan region in general is very much prone to earthquakes. Okay, and this region also, the northeastern wala pura region. इसीलिए आपने देखो, I'm sure you must have seen, we have seen landslides, floods in Himachal, Uttarakhand, even Delhi is very near, like it's not very far. Even in North UP and North Bihar also, we can see a lot of earthquake prone regions and all. Okay, this is Siwan, and यहीं पे ना, Siwan is here. Okay, somewhere here you will find Delhi. Okay, so this region, the Himalayan region, is very much earthquake prone. Now, why is Himalayan region very much earthquake prone? That I also am going to discuss in this class. Okay. Now, अगर आप देखो एक और example देता हूँ. This actually happened this year in 7th January. We had seen earthquake in Tibet of magnitude 7.1. तो अगर आप देखोगे ये हिमालयन रेंज है, यहीं पर तिब्बत है, यहाँ पर we had seen 7.1 magnitude earthquake. Okay, I hope you are aware of that. So यहाँ पर बिहार है, this is Bihar, this is UP, this is Delhi. Okay, so here we had seen actually last month we had seen earthquake. Okay, now अगर आप गौर से देखोगे, I am showing all these things from National Center for Seismology. Everywhere, जितना ही मैंने देखा है, सब National Center for Seismology का सोर्स से उठाया हुआ है. ठीक है. So now I have a question related with that. National Center for Seismology is under which ministry? Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Earth Sciences, Ministry of Science and Technology, Ministry of Home Affairs.
Yes, Priyanshi Goyal and Safi Nomani who both are right. The right answer is Ministry of Earth Sciences. Okay. Yes, Natasha, you are also right. Now, please tell me who is the Minister of Earth Sciences? Because ministers and ministries are asked in the exam. Okay. If you see CLAT and other exams, if you see the previous year question, there are a lot of occasions where ministers and ministries were asked. Yes, the right answer is Mr. Jitendra Singh. He is Minister of State in Ministry of Earth Sciences. Okay. Yes, Priyanshi Goyal, Safi Nomani, Tejasvi Thakur, you all are right. A is the right answer. देखो आपको एक चीज समझना होगा कि दिस इज नॉट अ कैबिनेट रैंक. आई होप यू अंडरस्टैंड द कैबिनेट रैंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट. देखो एक्चुअली मोस्ट लाइकली ऑन थर्सडे एट 6 PM थर्सडे या वेडनेसडे को मैंने शेड्यूल किया है. आई एम नॉट 100% श्योर. आइदर ऑफ द टू डेज देयर विल बी अ क्लास ऑन मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज. आई थिंक वेडनेसडे को मैंने शेड्यूल किया है मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज. Why? Because I find it important. You all had demanded also, and I believe that this is very, very important for the exams purpose also. That is why I will explain what is Minister of State, cabinet ministers and all. Okay. So the Minister of Earth Sciences is Dr. Jitendra Singh. Okay. He is having Ministry of Science and Technology and Earth Sciences both. Okay. Let's move on. So Ministry of Earth Sciences के अंदर IMD आता है. इसका आपने नाम सुना होगा, I'm sure. Indian Meteorological Department, which predicts monsoon. आपने देखा होगा IMD बताते हैं कि अच्छा बारिश होगी नहीं होगी. This is very important for farmers. May not be for us, but for farmers this is very helpful. जैसे हम लोग को उतना फर्क नहीं पड़ता है ना कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी. Why should I get to know? If I'll not be aware of it, okay, it's fine, चलेगा. But farmers के लिए ऐसा नहीं होता है. I mean, it is compulsory. It is must for them to know that when rainfall is going to happen. This is their lifeline. For common people, for those who are in service sector or studying students, they do not. I mean, for us, it might not be very much important, but for them, it is very important. इसलिए IMD बनाया गया specifically to predict monsoon, to predict cyclones, to tell the people that okay, this is how you have to respond now. Okay, खैर, so this is what you should know, है ना? तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के बारे में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर फार्मर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में देखो बहुत सारे नेशनल होते हैं. देखो ये है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. Similarly, we have Indian Institute of Tropical Meteorology, and then others also are there. National Center for Polar Oceanic Research, है ना? So अंटार्कटिका वगैरह में रिसर्च के लिए लोग जाते हैं. ठीक है. अर्ली वार्निंग सेंटर सुनामी के लिए. So these are the things you should be knowing. Now let's talk about this. देखो अब गौर से देखो. Again I am showing it to help to convince you to understand that. अगर आप देख रहे हो गौर से देखना, ये 16 to 30 days age of event इस रीजन में of India, you will see a lot of earthquakes. या earthquake types event देख रहे हो. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की वेबसाइट दिखा रहे हैं. रेस्ट ऑफ इंडिया में उतना नहीं है. कहां दिख रहा है? कुछ नहीं है. सो मोस्टली इफ आई से इट इज समवेयर अराउंड द रीजन ऑफ हिमालयस एंड ऑल. फिर यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में, बिकॉज दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द mountain range. I hope you are aware Andaman and Nicobar Islands are considered as remains of mountains. ठीक है. तो खैर, so that is what you should be knowing. And यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है ना. And the rest are actually plate boundaries. तो ये मैं आपको बताऊंगा what is plate boundaries and all. तो ये भी plate boundaries का example है. Now, first of all, you have to understand this. I use this word plate. आपने सुना होगा ये plate word. ये tectonic plate. So what is tectonic plate? It comprises of what? कोई बता सकता है? Can anyone tell me? So basically देखो हम लोग बोलते हैं कि प्लेट मूव कर रहा है. मान लीजिए प्लेट है, हम लोग कह रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट इज मूविंग. तो ये मूव कैसे करेगा? इसके नीचे कोई सेमी लिक्विड मटेरियल होगा तभी तो, जो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बाइक पे अगर आप तेल डालोगे, मोबिल डालोगे तो एक्सेलेरेटर ठीक से काम करेगा, ब्रेक ठीक से काम करेगा. वाई? So you need to give something at least which is liquid or semi-liquid in nature, just below it. तभी तो मूव करेगा, right? So that is what you should know. होता क्या है? क्रस्ट, पूरा क्रस्ट भी और थोड़ा सा, जैसे इसमें ठीक से नहीं बना हुआ है. Let me explain. तो कैसे होता है एक्चुअली? मान लीजिए ऐसे बनाया गया ना. So ये वाला ऐसा क्रस्ट है. Now this is mantle. और इसके नीचे कोर है. ठीक है. इनर कोर आउटर कोर इतना डिटेल नहीं जाना. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड मैंटल के
नॉर्थ वाले पोर्शन में समवेयर है, आई एम मेकिंग इट सम अदर पेन, येलो इससे बना रहा हूँ लाइट येलो से. दिस इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर. हैव यू हर्ड दिस? है ना. ये एस्थेनोस्फेयर एक तरह का सेमी लिक्विड टाइप काम करता है, सेमी लिक्विड मटेरियल नाम, है ना. इसके ऊपर का जो हिस्सा हुआ यानी क्रस्ट का हिस्सा और थोड़ा सा मेंटल का हिस्सा, ये दोनों मिलाकर के टेक्टोनिक प्लेट होता है. दिस इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक प्लेट. सो इट इज नॉट ओनली क्रस्ट बट सम पोर्शन ऑफ मेंटल आल्सो. ओके. क्यों? अब देखो ये जो क्रस्ट, ये जो पूरा चीज है, दिस व्हाट आई एम मेकिंग इट विद व्हाइट पेन. ठीक है. ये ना कई हिस्सों में टूटा हुआ होता है. सो आई एम मेकिंग इट विद रेड पेन टू ब्रेक इट. एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा. सो दीज आर ब्रोकन प्लेट्स एंड जस्ट बिलो इट यू विल फाइंड एस्थेनोस्फेयर. ये वाला हिस्सा एस्थेनोस्फेयर है जो जिसको मैंने अभी ग्रीन से हाईलाइट किया. एंड दिस इज एस्थेनोस्फेयर व्हिच इज सेमी लिक्विड इन नेचर. तो कोई हार्ड चीज जब नीचे उसके नीचे कुछ सेमी लिक्विड होगा तभी वो मूव करेगा, स्लिपरी होगा. सो यू गॉट इट, दैट इज व्हाई इट मूव्स. आई होप इट इज क्लियर. यस, इज इट क्लियर? ठीक है. सो इसीलिए दैट इज व्हाट द आइडिया इज. अब देखो होता क्या है, why do we have actually earthquakes in this region? अगर आप गौर से देखो ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स है एंड इफ यू सी इट केयरफुली, here is India and Indian plate है. तो जहां पर प्लेट बाउंड्री होती है, wherever you will find plate boundary, जैसे यहाँ पर प्लेट बाउंड्री है, the chances of earthquake is very high. Wherever you will find plate boundary, वहां पर earthquake आता है. ठीक है, फॉल्ट वहीं पे क्रिएट होगा ना. I hope it is clear. Wherever you will find plate boundary, you will find earthquakes there. Now, अब होता क्या है? There's a very famous theory, continental drift theory. Who gave it? Please write in the comment. So it was given by which person? Please tell me. तो ये बिलीव करते हैं कि एक पहले ना the entire land was one. That's called as Pangea. एक जमीन हुआ करती थी, उसको Pangea कहते थे. There was only one land in the entire world. It got split into Laurasia and Gondwana land. And the moment it got split, between that we have seen Tethys Sea. Okay. Now what happened was, if you are able to see, I'm making it with a green pen. This one, are you see? This is India actually, Indian plate. No, not Humboldt. It's actually Alfred Wegener के द्वारा दिया हुआ theory. We'll discuss. ठीक है. So this Indian plate, over a period of time, it went and it hit this region. ठीक है. And then जब ये plate हिटते गया, तो continental drift theory is given by Alfred Wegener. So it went on meeting that. देखो ये pieces आते गया and it hit it and it is now like this. तो यहाँ पे होगा, है ना? Indian plate moving and hitting this plate. Okay. तो यही है. तो पहले ऐसा था, पहले एक लैंड था पूरा, सब स्प्लिट हुआ, all got split and this Indian plate went and hit this. And when it hit this, it formed a Himalaya. That is why it is very young fold mountain. और ये अभी कुछ दिन पहले हुआ है. Like this is 71 million years ago and this is 10 million years ago. It hit. Now, from geography point of view, it is कुछ दिन पहले. You are saying that 10 million years ago, है ना? But still, and it led to the formation of Himalayas, and that is why it is considered as young fold mountain. So from mountain point of view, Himalaya is very young. So 10,000 year old is very young. 10 million year old, sorry, 10 million years ago is very young in context of mountain formation, because mountains are very old. तो 10 मिलियन साल जो है ना, वो माउंटेन्स के लिए जवान कहलाता है वो. ठीक है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. देखो जब प्लेट जाके हिट किया, व्हेन द इंडियन प्लेट वेंट एंड हिट इट, तो यहाँ पर प्लेट बाउंड्रीज बनता है. आई होप यू आर अवेयर, क्योंकि ऐसा कुछ होता है. व्हाट हैपेंस इज वन प्लेट कम्स, अनदर प्लेट कम्स, इट हिट्स एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. ठीक है. और इसके नीचे वही एस्थेनोस्फेयर है ना, ये सेमी लिक्विड होना चाहिए तभी नहीं मूव करेगा उसके ऊपर की जमीन. देन ओनली द प्लेट्स विल मूव and it hits and it led to the formation of Himalayas, and it is still hitting. तो ये वाला जो हिस्सा है, this is Indian plate, और ये वाला जो Tibetan plate है. So let us see, है ना, and it is still keep on hitting, and that is why Himalayas are still rising with a very slow pace, very slow, बहुत slow pace से rise होता है. ठीक है. So that is why this Indian plate is keep pushing it, and that is why this is still tectonically active. This is the word used. ठीक है. So जब वो पुश करते ही जा रहा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ना, something will happen, and that is why I always say that since this region is actually tectonically very active. Okay, I hope it is clear. Is it clear? I hope it is clear. ठीक है.
ना और भी दो तरीके, देखो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री. एक ऐसा होता है कन्वर्ज व्हेन द टू प्लेट्स कम्स एंड कन्वर्ज. देयर इज अनदर वन कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज को कहते हैं, जो स्लाइड करता है, एंड दिस वन इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. ठीक है. But currently we are talking about convergent plate boundaries, which is we are talking about is the formation of young fold of mountains called as Himalayas. ठीक है. तो इसलिए हिमालयास को यंग माना जाता है. These are young fold mountains. Fold मतलब दोनों फोल्ड हुआ ना. So the both the plates came and actually got folded. ठीक है. So that is what you should know. इसीलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा था कि इसी रीजन में अर्थक्वेक ज्यादा आता है. ठीक है. Because it is a plate boundary. प्लेट बाउंड्री पर अर्थक्वेक बहुत आता है. ठीक है. अगर आप देखो गौर से देखो इस सीस्मिक जोन को देखो, इफ यू सी इट केयरफुली, देखो लास्ट वाला है वो जोन 5, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक. देखो यहाँ पे ये वाला रीजन, ये हिमालयन रीजन, ये सब है कि नहीं, ये हिमालयन ही रीजन है ना. अब थोड़ा सा यहाँ पर आता है, ये इसका अलग रीजन है. भुज अर्थक्वेक हैपेंड इन गुजरात. आई एम श्योर 2001 या 2 में आया था. दिस इज वेरी फेमस. इट हैज सम अदर रीजन. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट अदर देन दैट जो भी रेड वाला रीजन है वो देखोगे सब हिमालय के आसपास का है. यस. और जो जोन 4 है, सेकंड डेडलीस्ट, दैट इज आल्सो द पार्ट इन हिमालय ओनली. देखो ये सब हिमालय के जोन 4 है ना. देखो जैसे यहाँ दिल्ली है, दिल्ली जोन 4 में आता है. आर यू एबल टू सी? सो बिहार का नॉर्थ वाला हिस्सा, नॉर्थ बिहार, आर यू एबल टू सी? सम पोर्शन इज रेड, मींस जोन 5 में आता है, और सम पोर्शन ऑफ बिहार इज एक्चुअली इन जोन 4. सो जोन 4 एंड 5 आर डेडली. 5 इज वेरी डेडली, 4 इज स्लाइटली लेसर डेडली. आई होप इट इज क्लियर. तो आप देख रहे हो मोस्टली इस रीजन में 4 एंड 5. यस. देयर आर फ्यू एक्सेप्शन. तो यहाँ पे थोड़ा सा मिलेगा मुंबई के पास वेस्टर्न घाट में, बिकॉज यहाँ पे भी माउंटेन्स है, और थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा कच्छ में. सो कच्छ हैज डिफरेंट रीजंस. दिस हियर इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट. देयर आर माउंटेन रेंज हियर आल्सो. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. बट बाय एंड लार्ज मोस्टली यहीं पे मिलेगा, एंड द रीजंस आई हैव एक्सप्लेन्ड. ठीक है. तो इस रीजन में अर्थक्वेक खाने का चांस ज्यादा होता है. दैट इज व्हाई अगर आपने सुना होगा, जैसे हिमाचल में भी हिमाचल में लैंडस्लाइड्स होता है. सोलान में हुआ था 2023 में एंड ऑल. Similarly, we had seen in like in Uttarakhand, we had seen Kedarnath 2013 very famous हुआ था, उसका फिल्म भी बनी है. Then सिक्किम में आया था 2 साल पहले. We had discussed editorial also. लोनाक लेक, glacial lake outburst flood 2 days back we had discussed an editorial. सब उसी रीजन में. अब गौर से देखना, मोस्टली अर्थक्वेक इसी रीजन में आता है. So that is what is being talked about, है ना. तो इसमें लिखा हुआ है seismic zone 4 में आता है दिल्ली. ठीक है. So this is what you should know. ये बता दिए. Which of the following is the oldest mountain range in India? बताइए. ये सब प्री वैक्यूज है, तो hopefully you all can answer. And this is not very difficult. Hopefully you all should be answering. Everyone, please press the like button and subscribe to our channel. Oldest mountain range in India. Yes, Priyanshi, Goel, Safi, Nomani, you are right. Aravallis. Because देखो हिमालय तो अब बना 10 million years ago, जब यहाँ पे actually when the folding happened. But ये वाला जो this is Aravalli, this was even much before that. ठीक है. So ईस्ट राजस्थान में मिलेगा आपको. So that is what you should know. ये काफी पुराना है ना. Which of the following is not the scale to measure in measuring earthquake? Richter scale, modified Mercalli scale, moment magnitude scale. What is the right answer? तो यहाँ पे मैंने not highlight कर दिया, but in examination hall you have to highlight it. You have to be careful कि not लिखा हुआ है. ठीक है. कई बार क्या होता है आदमी नॉट पढ़ता नहीं है, एंड देन यू गेट मी. व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर, टेस्ला. ठीक है. टेस्ला तो उसको मेजर करने के लिए होता है, इससे मैग्नेट से रिलेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ऑल, है ना. टेस्ला कंपनी भी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. But Richter scale, modified Mercalli scale और moment magnitude scale are used. ठीक है. इसका different style से use होता है. जैसे Mercalli is used for measuring intensity, moment magnitude भी use किया जाता है, then Richter scale is use किया जाता है ना. That is what you should know. Let's move on. The highest intensity earthquake or Richter we had seen, और highest magnitude कह लो, है ना, जो भी कह लो, was recorded in which country? Nepal, Chile, Argentina, Japan. What is the right answer? Highest कहाँ आया था इंसानियत की हिस्ट्री में? And what is the Richter scale? What is the number? It is again at the plate boundary. इतना आपको पता होना चाहिए, मैं दिखा दूंगा. प्लेट बाउंड्री इसी पे ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक आता है. बीच में आता है, जैसे कि प्लेट इसके बीच में अर्थक्वेक आता है, बट बहुत रेयर आता है because of some reasons.
but generally boundaries में earthquake आता है. Plate boundary. Yes, the right answer is Chile. B is the right answer. Yes, Priyanshi, Goel, and Natasha, you both are right. ठीक है, 9.5 magnitude, and it's the most famous one. देखो मैं आपको दिखाता हूँ. चिली देख रहे हो, यहाँ पे प्लेट है, नास्का प्लेट है, और यहाँ पर देखो ये चिली है. दिस इज चिली, लंबा सा देख रहे हो. यस, तो अगर आप देखोगे दिस इज साउथ अमेरिका और दिस इज चिली. ठीक है, तो आप देख रहे हो प्लेट बाउंड्री है कि नहीं. नास्का प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे बाउंड्री बन रहा है. ठीक है. अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, बाउंड्रीज जहां पे प्लेट बाउंड्री होता है वहां पर आइलैंड्स भी बनता है और माउंटेन्स भी बनता है. जैसे एंडीज माउंटेन है, these are found because of plate boundary. यहाँ पर नास्का प्लेट है और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है. So when they both meet, it leads to the formation of mountains. जैसे भी हिमालयस बना, सिमिलरली यहाँ पर एंडीज माउंटेन्स बना है. ठीक है. I'm not going in detail about how it is formed when there is ocean and continental plate boundaries meeting, but yes, you have to understand कि प्लेट बाउंड्रीज पर अर्थक्वेक आने के चांस होता है और माउंटेन्स भी बनता है. तो एंडीज माउंटेन बहुत फेमस है यहाँ पर. एंडीज आपने नाम सुना होगा, आई एम श्योर. ठीक है, तो यहाँ पे चिली पे आया था. अब देखो जितने भी फेमस है प्लेट बाउंड्रीज, देखो इंडिया का देखो, दिस इज इंडिया और यहाँ पे हिमालय है, हाई प्लेट बाउंड्रीज. ठीक है. अब देखो यहाँ पे आपने सुना जावा ट्रेंच वगैरह, जावा ट्रेंच का नाम सुना होगा. ये जावा है, यहाँ इंडोनेशिया का. ना नो नीड टू रिमेंबर दैट प्लेट नेम्स, आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया. ठीक है. तो अगर आपने सुना होगा दिस इज इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं. अगर इफ यू फॉलो द न्यूज़पेपर, I'm sure you must have heard that Indonesia witnessed a lot of earthquakes. तो यहाँ पे जावा ट्रेंच है, सुमात्रा ट्रेंच है ना, तो यहाँ पर earthquakes आता है. Yes. Similarly, I'm sure you must have heard Japan witnesses a lot of earthquakes. ये तो आपने सुना होगा. Why? Because this is the place where 3 plate meets, not 2 but 3 plates meets. देखो एक प्लेट ऊपर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, इनफैक्ट नीचे से भी एक आ रही है, तो 4 प्लेट लगभग मिलती है. And that is why here is Japan. That is why I'm sure you must have heard that Japan witnesses earthquake almost every day or something like that. ठीक है, तो उन लोग के आराम से earthquake आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, something like that. ठीक है. Yes. So these are the things. और भी बहुत जगह है, but I'm not going in that detail because काफी लंबा हो जाएगा. But here is I have one question. Now can you please tell me, there is a concept called as ring of fire. कहाँ मिलेगा आपको? कौन से ocean कहाँ पर? Ring of fire. This is the place where the chances of earthquake and volcano is very high. It is also of course on the plate boundaries. ज्यादा earthquake plate boundaries ही पर आता है. जैसे कुछ दिन पहले एक बार आया था, मोरक्को में आया था, आपने सुना होगा. तो मोरक्को भी यहाँ पर है, याद है लास्ट ईयर आया था मोरक्को में. फिर यहाँ पे टर्की के साउथ टर्की में आया था, साउथ टर्की याद है 2 साल पहले. इंडिया ऑल्सो हेल्प, है ना. सो दीज आर द प्लेसेस. यस, तो ये वाला जो है आई एम मेकिंग इट विद रेड पेन. देखो ये देखो, जो पैसिफिक प्लेट जहां टच करता है, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला देख रहे हो. This is actually the Pacific Ring of Fire, है ना. So Ring of Fire देखो यहाँ पे मैं इधर पे दिखा रहा हूँ, है ना. This is actually Ring of Fire. ठीक है, तो ये चिली है ना, यहाँ पे चिली कंट्री है ना. तो मैंने बताया कि चिली में we had seen that 9.5 है ना earthquake. So this is actually very much prone to earthquakes. ठीक है, because ये प्लेट बाउंड्री बनता है, ये पैसिफिक प्लेट है और इसका सारा प्लेट टच करता है इधर से. और यहीं पर है चैलेंजर डीप. प्लेट बाउंड्रीज में सारी चीज होती है, जो मैरियाना ट्रेंच होता है, सब प्लेट बाउंड्री में ट्रेंच बनता है, ट्रेंच भी वहां बनता है, माउंटेन्स भी बनते हैं, सब कुछ प्लेट बाउंड्रीज पर होता है. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन ऑन प्लेट बाउंड्रीज. ठीक है, कैसे ट्रेंच बनता है, तो लेट मी, अगर मैंने मैप बनाया तो नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है, जैसे एक प्लेट एक के नीचे चला गया. ठीक है, सो लाइक दिस. तो यहाँ पर ट्रेंच बनता है. आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया बिकॉज उसके बहुत सारे रीजन होते हैं ट्रेंच बनने का एंड माउंटेन्स बनने का. बट यू शुड नो दैट इन द प्लेट बाउंड्रीज देयर आर चांसेस ऑफ मेकिंग ट्रेंच. इसीलिए मारियाना ट्रेंच यहीं पर है. ठीक है, और फिलीपींस जो आइलैंड्स भी हैं, द स्मॉल आइलैंड्स दैट आर आल्सो फाउंड बिकॉज ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज. सो आई होप इट इज क्लियर. देखो जापान में अर्थक्वेक आता है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ठीक है, यहाँ पर चिली में अर्थक्वेक आया था, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ठीक है, इनफैक्ट जावा वाला जो है ना, जावा सुंदा स्टेट, उसको भी उसका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट ही मान लिया था. एंड दैट इज व्हाई इंडोनेशिया में भी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ अर्थक्वेक्स. इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये फिलीपींस है, जापान है, जापान में तो बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव सीन दिस, है ना. माउंट सेंट हेलेंस यहाँ पर है, यहाँ पर भी अर्थक्वेक्स वगैरह भी हैव सीन. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. तो अगर आप देखोगे 90% ऑफ द वर्ल्ड क्वेक्स हैपन इन दिस रीजन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में. ओके. Now, since we are talking about it, even this was also a part of Pacific earthquake in Pacific Ring of Fire.
This led to earthquake से आता है ना. If there is earthquake inside the water body, it leads to actually Pacific Ring of Fire. It leads to actually a tsunami. Yes, it came in 2004. So B is the right answer to this question, है ना. देखो सुमात्रा अंडमान earthquake लिखा है ना. सुमात्रा is an island of Indonesia. ये जो सुमात्रा है और ये वाला बगल वाला जावा है, ठीक है. So I hope you are aware, है ना. तो अभी जो हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बताते हैं तो पूरा ये वाला हिस्सा को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर माना जा रहा है ना. देखो अगर आप से देखो, है ना, रिंग ऑफ फायर है. देखो ये वाला हिस्सा, दिस इज सुमात्रा, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट. तो यहाँ पे अर्थक्वेक आया, इससे जो है इट एक्चुअली कॉज्ड द अर्थक्वेक हैपेंड एंड दिस हिट, इसके बगल में एकदम अंडमान निकोबार है एंड देन इट हिट तमिलनाडु एंड अदर प्लेसेस. सो द सुनामी दैट केम बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. यहीं पर अर्थक्वेक आया था सुमात्रा में, ठीक है. एंड आफ्टर दैट व्हेन इट केम इन 2004 वी फॉर्म डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट and this law was passed and now we are having a body called as NDMA, National Disaster Management Authority, under this, okay. And DM Act was actually invoked during COVID also, Disaster Management Act. So we have NDMA, National Disaster Management Authority, headed by Prime Minister, okay. Similarly we have a force which helps, so a sort of police force, not exactly police force but similar to that, National Disaster Response Force. इस तरह orange color का dress होता है इन लोग का. So they come and help during disaster. Even if I'm not wrong, if you have got a chance to visit Kumbh, I'm sure you will find these type of people. So NDRF personnel are there with the boats and all, so that if there, God forbid, if there is any tragedy happens or if it's going to happen, they are going to support or help. आपने देखा होगा अगर आप कुंभ में भी गए होंगे तो I'm sure कि NDRF के पर्सन वहां पे होंगे orange dress में, I'm sure. Or let's say you have got a chance to visit any coastal region or wherever there are earthquakes or any disaster, they are sent, ठीक है. देखो जो टर्की भेजा गया था 2 years back, so National Disaster Response Force. Similarly we have SDRF at state level, State Disaster Response Force and all is also there, ठीक है. So that is what you should be knowing. NDMA जो होता है ना, National Disaster Management Authority, NDMA के head Prime Minister होते हैं. Similarly SDMA होता है State Disaster Management Authority, headed by Chief Minister, and District Disaster Management Authority, headed by DM. So that is what you should know. Okay, I hope it is clear. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.